Hello everyone. In previous class, we discussed about the synchronous generator. What is it? What is the working principle of the synchronous generator or alternator? EMF equations of the alternator and no load and on load condition of synchronous generator. In this lecture, we will discuss about armature reaction of three-phase synchronous generator or alternator and equivalent circuit of the synchronous generator or alternator. So let's start with topic 1. Armature reaction in synchronous generator. So firstly, we will discuss about what is armature reaction. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि armature reaction क्या होती है. तो हमने डीसी मशीन में भी armature reaction का स्टडी किया था. Armature reaction अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो armature reaction is the effect of main field flux to the armature flux. और हम बोल सकते हैं armature flux और main field flux है, इन दोनों के बीच का जो effect होता है उसको हम armature reaction बोलते हैं. So it is the effect of armature flux to the main field flux is called armature reaction. मतलब एक दूसरे जो फ्लक्स है, एक आर्मेचर का फ्लक्स होता है और एक फील्ड का फ्लक्स होता है, इनके बीच का जो इफेक्ट है, दोनों ऐड हो रहे हैं या दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, कोर को मैग्नेटाइज करेंगे या डीमैग्नेटाइज करेंगे या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे, तो ये सारे इफेक्ट हम स्टडी करेंगे. और आर्मेचर रिएक्शन को हम इन शॉर्ट डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स टू द मेन फील्ड फ्लक्स. In an alternator, like all other synchronous machines, the effect of armature reaction depend on the power factor. ये बहुत ही important चीज़ है कि जो दूसरी machines होती हैं उसके अलावा alternator का जो armature reaction है या synchronous machine का जो armature reaction है वो depend करता है power factor. That is the phase relationship between the terminal voltage and the armature current. Means V और I के बीच का जो relation है उस पे आर्मेचर रिएक्शन जो है वो उसका इफेक्ट डिपेंड करता है. रिएक्टिव पावर लैगिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी. सो इफ द जनरेटर सप्लाई अ लैगिंग लोड, दिस implies that it is supplying magnetic energy to the load. Since this power comes from excitation of the synchronous machine, the net reactive power gets reduced in the generator. Hence, the armature reaction is demagnetizing. Similarly, the armature reaction has magnetizing effect when the generator supply a leading load. तो armature reaction जो होती है in case of synchronous machine उसके तीन effect होते हैं. पहला effect होता है magnetizing effect, second one is called the demagnetizing effect and third one is called the cross magnetizing effect. तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है और मेन फील्ड फ्लक्स है, दोनों जो होंगे अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारा जो कोर है वो मैग्नेटाइज होगा ज़्यादा और इसी को हम मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे. डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होगा? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है और फील्ड फ्लक्स है वो अपोजिट ईच अदर होंगे, मतलब एक दूसरे के दोनों अपोजिशन में होंगे, तो कोर को डीमैग्नेटाइज करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. ठीक है. और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे. सो एज द लीडिंग लोड टेक्स द लीडिंग VAR and in return gives lagging VAR magnetic energy to the generator. In case of purely resistive load, the armature reaction is cross magnetizing only. अब ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कब होगा? जब हमारे पास चूंकि आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड कर रही है V और I के बीच के एंगल को, मींस पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है आर्मेचर रिएक्शन, तो जब हमारा लैगिंग लोड होगा तो लैगिंग लोड कंडीशन में जो
आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। लीडिंग लोड जो होगा उस कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट जो होगा वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। और जब हमारे पास रेजिस्टिव लोड होगा तो उस कंडीशन में जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा उसको हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। The armature reaction of alternator or synchronous generator depend upon the phase angle between stator armature current and the induced voltage across the armature winding of the alternator. So, case 1, armature reaction of alternator at unity power factor or resistive load condition. So, this is the diagram or the effect of main flux to the armature flux. इसमें हम देख सकते हैं मेन फ्लक्स का जो आर्मेचर फ्लक्स पे या आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन में, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन में एंड जीरो पावर फैक्टर लीडिंग कंडीशन में। देखिए हम देख सकते हैं आर्मेचर फ्लक्स और जो फील्ड फ्लक्स है इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। इन केस ऑफ फिगर बी जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा मेन फ्लक्स है और जो आर्मेचर फ्लक्स है दोनों जो है वो क्या है अपोजिट फेज में है, तो इसलिए कोर को क्या करेंगे डीमैग्नेटाइज करेंगे। सो द इफेक्ट को हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन और उसके तीन इफेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी हम इसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है इस कंडीशन में डायग्राम सी में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा मेन फ्लक्स है और जो आर्मेचर फ्लक्स है दोनों का फेज जो है वो सेम है। मींस जब मेन फ्लक्स का पॉजिटिव फेस आ रहा है तभी हमारा आर्मेचर फ्लक्स का भी पॉजिटिव फेस आ रहा है, मतलब दोनों सेम फेस में है। तो कोर को क्या करेंगे मैग्नेटाइज करेंगे। सो दिस condition create a magnetizing effect, or we can say that the zero power factor leading create the magnetizing effect। ये जो क्रिएट करेगा बी वाला ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा इसमें, और पहले वाले में जो होगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। At unity power factor, the angle between the armature current and induced EMF E is zero. That means armature current and induced EMF are in same phase. But we know theoretically that EMF induced in the armature is due to changing main field flux linking with the armature conductor. As the field is excited by DC, the main field flux is a constant in respect to the field magnets, but it would be alternating in respect of armature as there is a relative motion between field and armature in the alternator. If the main field flux of the alternator in respect of armature can be represented as phi f is equal to phi fm sine omega t.
Again, at unity electrical power factor, I and E are in same phase. So at unity power factor, phi A is phased with E. So at this condition, armature flux is in phase with induced EMF E and the field flux is quadrature with E. Hence, the armature flux phi A is in quadrature with main field flux phi F. As these two fluxes are perpendicular to each other, the armature reaction of the alternator at unity power factor is purely distorting or cross magnetizing type. तो जो फ्लक्स होती हैं दोनों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं एट यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन. As the armature flux pushes the main field flux perpendicularly, distribution of main field flux under pole phase does not remain uniformly distributed. The flux density under the trailing pole's tip increased somewhat, while under the leading pole tip it decreased. Now next case 2, armature reaction of the alternator at lagging zero power factor condition. So this is the second condition, this is called the lagging condition. इस condition में जो हमारा armature reaction का effect होगा वो कौन सा होगा? Demagnetizing effect होगा. अभी हमने पहले देखा यूनिटी पावर फैक्टर जिसमें कि इफेक्ट था हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जिसमें कि दोनों फ्लक्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स. अब हम स्टडी कर रहे हैं केस नंबर 2. आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द केस 3. तो चलिए देखते हैं केस 2. At lagging zero electrical power factor, the armature current lagged by 90 degree to induced EMF in the armature. As the EMF induced in the armature coil due to main field flux, thus the EMF leads the main field flux by 90 degree. From equation 1, we get the field flux here phi f got maximum value 90 degree before E. Hence phi f leads E by 90 degree. Now the armature current I is proportional to the armature flux phi A and I lag E by 90 degree. Hence phi A lag E by 90 degree. So it can be concluded that field flux phi F leads E by 90 degree. Therefore, armature flux and field flux act directly opposite to each other. Thus, the armature reaction of the alternator at lagging zero power factor is purely demagnetizing type. That means armature flux directly weaks main field flux. तो जो हमारा सेकेंड वाला है लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन, इस कंडीशन में जो हमारा इफेक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन का वो
प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। The next is case 3, armature reaction of alternator at leading power factor। तो अब हम देखेंगे ये केस 3 जिसमें हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों सेम फेज में हैं। तो ये क्या करेंगे, कोर का मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। और आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहलाएगा इन द लैगिंग और इन द लीडिंग लोड कंडीशन। At leading power factor condition, armature current I leads induced EMF E by the angle 90 degree। 90 डिग्री कब होगा, जब हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव लोड होगा। सिमिलरली जब हमारे पास प्योरली इंडक्टिव लोड होगा तब हमारा जो एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच का वो 90 डिग्री होगा। बट चूंकि हमारे पास प्रैक्टिकली प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव लोड नहीं होते तो एंगल एग्जैक्ट 90 ना होकर उससे कुछ कम होता है। Again we show just the field flux phi f leads induced EMF E by 90 degree. Again armature flux phi A is proportional to the armature current I, hence phi A is in phase with I. Hence armature flux phi A also leads E by 90 degree as I leads E by 90 degree. As in this case both the armature flux and field flux lead induced EMF E by 90 degree, it can be said the field flux and the armature flux are in same direction, and the resultant flux is simply arithmetic sum of field flux and the armature flux. Hence at last it can be said that armature reaction of the alternator due to a purely leading electrical power factor is magnetizing type, or we can say that कि जब हमारा leading power factor effect होगा उस condition में armature reaction का effect magnetizing effect होगा। Next is the nature of armature reactions. Number 1, the armature reaction flux is constant in magnitude and rotate at synchronous speed. Number next, the armature reaction is cross-magnetizing when the generator supplies a load at unity power factor. Number 3, when the generator supply a load at leading power factor, the armature reaction is partly demagnetizing and partly cross-magnetizing. When the generator supplies a load at leading power factor, the armature reaction is partly magnetizing and partly cross-magnetizing. Number 5, armature flux acts independently of main field flux. So these points represent the nature of armature reaction. By the definition, synchronous generator produce electricity whose frequency is synchronized with mechanical rotational speed. So the frequency of this is Fe is equal to Nm P divided by 120, or we can say that Ns is equal to 120 F by P. उसी से हमने frequency का फॉर्मूला निकाला है, where Fe is the electrical frequency and P is the number of poles. Steam turbines are most efficient when rotating at high speed
Therefore, to generate 60 Hz, and they are usually rotating at 3600 rpm at turn 2-pole generators. Water turbines are most efficient when rotating at low speed 200 to 300 rpm. Therefore, they usually turn generator with many poles. तो एक सिंपल फंडा हमें समझ में आ रहा है, अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो नंबर ऑफ पोल्स कम रहेंगे, स्पीड जितनी कम होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स हमें जनरेटर में बढ़ाने पड़ेंगे। तो सिंक्रोनस जनरेटर का यूज एक्चुअली होता कहाँ है? पावर जनरेशन में और पावर प्लांट्स में। The magnitude of internal generated voltage induced in a stator is given as EA is equal to under root 2 pi NC phi F is equal to K phi omega, where K is a constant representing the construction of the machines and phi is the flux in it and omega is its rotational speed. This is the magnetization curve of synchronous machine or open circuit characteristics of synchronous machine. Since flux in the machine depend on the field current through it, the internal generated voltage is a function of a rotor field current. The internally generated voltage in a single phase of a synchronous machine EA is not usually the voltage appearing at its terminals. It equals to the output voltage V phi only when there is no armature current in the machine. The reason that the armature voltage EA is not equal to the output voltage V phi are: number 1, distortion of the air gap magnetic flux caused by the current flowing in the stator create armature reaction. Number 2, self-induced or self-inductance of the armature coils. Number 3, resistance of the armature coil. Number 4, effect of salient pole rotor shapes. Armature reaction is the largest effect. When the rotor of a synchronous generator is spinning, a voltage EA जो वोल्टेज हम ले रहे हैं ये A फेज का वोल्टेज ले रहे हैं। सपोज हमारे पास 3 फेज का अल्टरनेटर है ABC, तो उसका एक फेज का वोल्टेज या पर फेज वोल्टेज EA है। EA is induced in its stator. When a load is connected, a current starts flowing, creating a magnetic field in a machine's stator. This stator magnetic field BS added to the rotor magnetic field BR, affecting the total magnetic field and therefore the phase voltage. You can see the diagram. Assuming that the generator is connected to a lagging load, the load current IA will create a stator magnetic field BS, which will produce the armature reaction voltage E start. Therefore, the phase voltage will be V phi is equal to EA plus E start. The net magnetic flux will be B net is equal to BR plus BS. इसमें हमने फ्लक्स को B से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहे तो फाई से आप सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं, B ले सकते हैं। Where BR is called the rotor field and BS is called the stator field. क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटिफिकेशन यूज होते हैं तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। Note that the direction of the net magnetic flux and the phase voltage are the same.
Assuming that the load reactance is X, the armature reaction voltage is E star is equal to minus of J XIA. The phase voltage is then V phi is equal to EA minus of JX into IA. This is the per phase equivalent circuit of the alternator. Armature reactance can be modeled by the following circuits. However, in addition to the armature reactance effect, the stator coil has a self-inductance LA. XA is the corresponding reactance, and the stator has resistance RA. The phase voltage is thus V phi is equal to EA minus of J into X into IA minus of J XA into IA minus of R into IA. तो ये जो सर्किट डायग्राम हम देख पा रहे हैं, आर्मेचर रिएक्टेंस को हम इस तरीके से मॉडल कर सकते हैं. ये हमारा मेन वोल्टेज है, IA is called the armature current, एंड V phi जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी हमने लिख लिया है. Often, armature reactance and self-inductance are combined into the synchronous reactance of the machine. So, XS is equal to X plus XA. Therefore, the phase voltage is V phi is equal to EA minus of JXS into IA minus of R into IA. So, these are the equivalent circuit of the alternator per phase. The equivalent circuit of three-phase synchronous generator is shown in a figure. The adjustable resistor R ADJ control the field current and therefore the rotor magnetic field. तो ये हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये फेज ए का जो है EA1 जो है ये फेज ए का है, EA2 फेज बी का और EA3 फेज सी का इक्विवेलेंट सर्किट है. और इक्विवेलेंट सर्किट हम जब भी बनाएंगे तो हम पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ही ड्रॉ करते हैं. A synchronous generator can be star or delta connected. This is the star connected synchronous generator and this is the delta connected synchronous generator. तो star connected अगर हमें बनाना है तो पर फेज हमने जो आर्मेचर साइड का सर्किट है अल्टरनेटर का उसको मॉडल कर लिया. उसके लिए हमारे पास एक वोल्टेज EA वोल्टेज लगेगा. आफ्टर दिस दी सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो कॉम्बिनेशन है XA प्लस X का इंटू RA ये हमने बना दिया. तो ये हमारे पास ये हमने एक फेज का बनाया है, सिमिलरली हमने फेज 2 का बनाया है, सिमिलरली हमने फेज 3 का बनाया है. चूंकि स्टार कनेक्टेड है सो दिस इज कॉल्ड द स्टार कनेक्टेड जनरेटर एंड दिस वन इज कॉल्ड द डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर. So the terminal voltage will be VT is equal to, in case of star connection, root 3 times of V phi. In case of delta connection, VT is equal to V phi. मीन्स डेल्टा कनेक्शन में हमारा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है. इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन इस ये रूट 3 टाइम्स होता है. The discussion above assume a balanced load on the generator. तो जनरेटर का हमने जो लोड एज्यूम किया है वो हमने बैलेंस लोड लिया है, अनबैलेंस कंडीशन हमने कंसीडर नहीं किया है. Since for balanced loads the three phase of the synchronous generator are identical except for phase angle, per phase equivalent circuit are often used. So this is the per phase equivalent circuit of the alternator. This first side represented the field side and another second right hand side is represented the armature side circuit. So this is called the per phase equivalent circuit of the alternator. Next is references.
So these are the references of this presentation. So in this lecture we cover armature reaction and its effect and the equivalent circuit of the alternator. So any doubt anybody, please ask me, and thank you for watching this video.